Okay. Next we'll go for paramagnetism. Which you remember that diamagnetism क्या करेगा? It will always repel the original electric field, original magnetic field को. Okay. Now paramagnetism. तो इसका भी properties देखेंगे paramagnetism में. In some materials, electrons are unpaired and net magnetic movement is not zero. In the paramagnetism में, some are unpaired. Net magnetic moment is not zero. So there are atomic dipoles in paramagnetic substance. So compulsory atomic dipoles are there because orbital में ऐसा रहेगा, unpaired रहेगा. Okay. Now see the properties. इसका क्या है properties? Now what will happen when we apply external electric field? Dipoles are there, right? Dipoles are in zigzag manner, right? Now एक material में all dipoles are in zigzag manner. Net dipole moment कितना होगा? Zero हो जाएगा. Even paramagnetic substance में net dipole moment is zero. But dipoles are there now here. Now, what will happen in the absence of external magnetic field? The atomic dipoles are randomly aligned, and net magnetic moment of the material is zero. It is randomly oriented, and net magnetic moment is zero in this case. Now, what will happen when we apply a external magnetic field? The atomic dipoles align in the applied direction due to the torque acting on it. वो पूरा एलन हो जाएगा. This one we studied it already. ये पूरा ऐसा एलन हो जाएगा. That means, now tell me, whenever external magnetic field H I am applying, I is also in the same direction. I is positive, negative. I is intensity of magnetism is positive, negative. Positive. Positive, because in the same direction. Some examples: aluminum, platinum, chromium, manganese. These all are examples of paramagnetic substance. Then, okay, chalo. Now we'll go for properties of paramagnetic substance. The magnetization I is slightly positive due to dipole alignment. So I is positive. And if I is positive, susceptibility is small and positive. For example, for aluminum this much. Take a positive and small value. Because I is equal to zeta h, right? I equal to zeta h. In the same direction, h direction only I is there. That's why zeta is positive. Okay. Now, copy it. Now, when a paramagnetic substance is placed inside the magnetic field, the magnetic field lines become slightly more dense in the paramagnetic material. Because since the magnetic field lines pass होगा ना, diamagnetism में क्या होता? आप रिपल होता था, inside नहीं जाता था. Now इसमें क्या होगा? External field will pass through this also in this. More denser हो जाएगा.
बिकॉज ऑफ डाइपोल्स के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है एंड एक्सटर्नल फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, सो मोर डेंस हो जाएगा इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. So the substance will attract, right? The substance will attract. So in a non-uniform way, when I put a paramagnetic substance, what will happen? It will go from stronger to weaker, weaker to stronger. Weaker to stronger. Weaker to stronger. Yes. There we go. In a non-uniform magnetic substance, magnetic field, a paramagnetic substance tends to move from weaker part to the stronger part. Okay. Now relative permeability. देखो. Relative permeability is greater than 1. Why? Mu r is equal to 1 plus zeta, right? Zeta is positive and small. That's why it's greater than 1. Mu r is greater than 1. And now we will see the relation between susceptibility and temperature. It is inverse relation. Susceptibility is inversely proportional to temperature, but diamagnetic substance में does not depend on temperature. But इसमें inverse relation है susceptibility. इसी में formula आएगा, एक छोटा सा formula आएगा. So susceptibility is inversely proportional to 1 by T. And and this law is nothing but क्या बोलते हैं? Curie's law बोलते हैं. Curie's law. And when I remove proportionality, we'll get a constant. Susceptibility is equal to C by T. And C is nothing but Curie's constant. Curie's constant. It has no fixed value. मतलब एक material का एक Curie's constant will be there. So that's why they'll give, if they in the question में, they'll only mention. But susceptibility is equal to C by T, and T should be in Kelvin. So inverse relation है in paramagnetic substance में susceptibility is inversely proportional to 1 by T. चलो, और इसका बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे. करो. For a magnetizing field of intensity, so what is given? A magnetizing field. Which letter? Which symbol? H. Very good. H is equal to 2 into 10 cube ampere per meter. Aluminum at temperature this much. Temperature is 280 Kelvin. This is for aluminum. Acquires intensity of magnetization. I is equal to 4 into 10 power of minus 2 ampere per meter. दोनों के units are same. Find susceptibility of aluminum at this temperature. Find susceptibility at this temperature. So we know the relation between I and H, right? Use that and find the susceptibility. So how much susceptibility? I is equal to zeta H, right? 2 into 10 power minus 5. 2 into 10 power of minus 5. No units are there. Okay. Now what is saying? If the temperature of the metal is raised to 320 Kelvin. See, since aluminum is a paramagnetic substance. Aluminum is a paramagnetic substance. Now I am raising to temperature. Then susceptibility will change, right? If zeta will change, I also will change, right? So it's telling new intensity of magnetization. I dash is how much? I dash is nothing but zeta dash times of H. H is the same. So पहले zeta dash find करो. If I substitute, you'll get I dash.
So what and about will C? huh? Curious constant. Curious constant का जरूरत नहीं है. Why? Zeta find करो. Zeta is how much? Zeta is inverse temperature, right? So I can write like this: zeta 2 by zeta 1 is equal to T1 by T2. Inverse relation. So So the C will get 1.5 cancelled. 1.75 into 10 power minus 5. कर रहे यार, we are seeing somewhere. Done. Sir. Doubt आ रहा है मुझे. Okay, zeta is equal to 1.75 into 10 power of minus 5. Okay, now zeta dash आ गया ना. Now substitute here. I is equal to zeta dash of H. H तो same है. Mm. 3.25 into 10 power minus 2. Yes. 3 I dash is equal to 3.25 into 10 to the power of minus 2 ampere per meter. So here he will not mention, but example ke through also we can tell it is a paramagnetic substance. Khatam, para done. Now we'll talk about third type material is ferromagnetism substance. So ferromagnetism के बारे में anything you know? Any 2 points? Pratik बोलो. नहीं वाला. Chapter नहीं हुआ ना? आपका ferro no? Okay चलो. इसके बारे में देखेंगे. Ferromagnetic substance. There are atomic dipoles in ferromagnetic substance, like just like paramagnetic substance. Atomic dipoles are there. Okay. इसके पास डोमेन्स रहेगा. डोमेन थ्योरी. So domains क्या है? We'll see. देखो, in ferromagnetic materials, the atomic dipoles interact with each other in such a way that they spontaneously align themselves in some directions in small volumes called domains. देखो, so क्या होगा? इस मटेरियल में, एक मटेरियल में डाइपोल्स विल बी देयर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन वाला. वो ये सपोज ये डाइपोल्स आर देयर, ये डाइपोल्स आर देयर. वो बोलेगा आप भी मेरे कैस्ट में आ जाओ, आप भी मेरे कैस्ट में आ जाओ. सब लोग सेम डायरेक्शन वाला सभी एक ग्रुप बनेगा. एक ग्रुप बन के दिस इज कॉल्ड वन डोमेन. एक बन गया एक रीजन. एंड ये वाला इससे नहीं मिलेगा. नहीं नहीं, आप डिफरेंट कास्ट है. ये लोग सेम सेम वाला मुझे आ जाओ बोलते हो. ऑल विल बी कमिंग हियर एंड विल फॉर्म ए ग्रुप्स कॉल्ड डोमेन्स. एंड डोमेन साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन थ्योरी विल बी देयर कंपल्सरी. डोमेन्स ओनली. ओके, 10 power minus 12. देखो इतना छोटा डोमेन्स है. सो मिलियंस ऑफ डोमेन्स विल बी देयर. ओके, now what will happen if I go on external field apply करूंगा. एक्सटर्नल सपोज मान लो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ. सो इसका डोमेन्स क्या होगा? देखो ये वाला स्टार्ट रोटेटिंग, ऐसा स्टार्ट रोटेटिंग धीरे धीरे. सो एक बार होने के बाद ये भी ज्वाइन हो जाएगा. ये भी ऐसे घूम के इधर आएगा. ये भी घूम के इधर आएगा. सो डोमेन साइज विल इंक्रीज, राइट? डोमेन ग्रोथ विल हैपन. ओके, हाँ लिखो. सो व्हेनेवर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, डोमेन ग्रोथ भी होगा, डोमेन ओरिएंटेशन भी होगा. So in each domain में 10 power of 20 atoms approximately. 10 power of 20 means see how many millions of atoms are there. Then okay, देखो.
ओके, तो देखो when the domain क्या हो रहा है, when we increase the thing domain growth भी होगा, domain orientation भी होगा. So पहले ऐसा था because of external magnetic field ये थोड़ा घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और भी अप्लाई करें तो ऐसा सीधा आ जाएगा and this will be joined in this. Domain growth will increase, domain orientation will also happens. Okay, चलो. Now we'll see the examples of ferromagnetic substance: iron, nickel, cobalt, alloys of alnico. Okay, aluminum, nickel, cobalt. This is all. Alnico means aluminum, nickel, cobalt. So these all are ferromagnetic substance. So पेरा से थोड़ा ज्यादा रहेगा सब कुछ, फेरो विल भी थोड़ा ज्यादा रहेगा प्रॉपर्टीज, वो थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा अट्रैक्शन ऐसा. इन दैट्स पे इन मूविंग कॉइल गैल्वामीटर में रेडियल फील्ड में वो सिलेंडर रहेगा ना, सॉफ्ट आयरन कोर, दैट सिलेंडर विल टू के मटेरियल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सो दैट ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आपके तरफ उसके तरफ अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का. ओके, देखो प्रॉपर्टीज सीखेंगे. द आई इज लार्ज एंड पॉजिटिव ड्यू टू डोमेन फॉर्मेशन. आई इज वेरी लार्ज इसमें, and I is very large means susceptibility is also very large and positive. Okay. Now, if when the ferromagnetic substance is placed inside the magnetic field, the magnetic field lines becomes high dense in the ferromagnetic materials. देखो I told right, इसमें और भी लाइंस पास होगा बिकॉज हाई डेंस हो जाएगा. पेरा में थोड़ा कम है, इसमें ज्यादा है. ओके, अट्रैक्शन है ना, ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला सबसे ज्यादा फेरो वाला. And similarly, in a non-uniform field, a ferromagnetics move quickly from weaker to stronger field. Because ये भी अट्रैक्ट है ना, स्ट्रॉन्गर किस तरफ है उस तरफ चले जाएगा मटेरियल. Then okay, now relative permeability. Relative permeability is much greater than 1 because you know that mu r is equal to 1 plus zeta. So zeta is very high, mu r is much greater than 1. बहुत ज्यादा है. एंड ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर में ये भी इनवर्स रिलेशन है, ये भी इनवर्स रिलेशन है. बट नो स्पेशलिटी क्या है मालूम है. सपोज यू टू के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इफ आई गो ऑन हीटिंग सो आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज ओरिएंटेशन चेंज होता है, डोमेन्स विल चेंज राइट व्हेन आई गो ऑन हीटिंग मटेरियल. एक सर्टेन टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. उसका प्रॉपर्टीज निकल के थोड़ा कम हो जाएगा बहुत हीट करने से. So that at what temperature that ferro is becoming para means the temperature is nothing but Curie's temperature. At that Curie's temperature में the ferro is converted to para. उसका प्रॉपर्टीज कम हो जाएगा. ये ज्यादा अट्रैक्ट करता था, बहुत हीट करने से उसका कम अट्रैक्शन हो रहा है. ओके, देखो the ferromagnetic behavior of substance becomes temperature dependent. And with the rise in temperature, the susceptibility of the ferromagnetic substance decreases. So as we increase the temperature, the susceptibility will decrease. Okay. At certain temperature,
the magnetics pass over a paramagnetic. A certain temperature में the ferro will convert into paramagnetic substance, and the transition, which temperature, the temperature is called as Curie's temperature or Curie point बोलते हैं. Curie's temperature we represent TC. Example, Curie temperature for iron is 770 degrees Celsius. मतलब at that temperature में before it is ferro था, but at that temperature it becomes to para. Okay, like we'll draw the graph also now. Done. Okay, चलो. Now इसका ग्राफ देखेंगे, susceptibility versus temperature in ferromagnetic substance. Okay, so पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, as the temperature increases susceptibility decreases, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होकर डिक्रीज हो, टेम्परेचर बढ़ता गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होता गया. ओके, एक सर्टेन टेम्परेचर में the temperature I call as TC, Curie's temperature. It will behave like a paramagnetic substance. And paramagnetic substance, you know, susceptibility कैसे decrease होगा, inverse relation, right? ऐसा decrease होगा. This is here till here ferromagnetism, magnetic material. And here it will be after TC, it becomes paramagnetic. This first region, second region. Okay, and iska in this में the second region में the susceptibility is inversely proportional to 1 by T minus TC. मतलब ये निकाल देने का, राइट, T माइनस 0 से TC तक निकाल देने का. सो T माइनस TC ऐसा फॉर्मूला है, एंड दिस इज नथिंग बट क्यूरीज वीस लॉ. सुना होगा ना, क्यूरीज VEISS, वीस लॉ. Okay, and when I remove proportional, we will get constant. So susceptibility is equal to C by T minus TC, and C is a Curie's constant. This is nothing but Curie's Weiss law. And temperature should be in Kelvin. Okay. Ferro also done. We left with small topic hysteresis. बोलकर आएगा, सुना होगा नाम hysteresis बोल के. Okay, चलो. And when I should take test, ये वाला? Should I take? We'll check once. अभी तक कितने चैप्टर्स हुआ? 5 चैप्टर्स हो गया हमारा. 1, 2, 3 and more charges magnetism and 5 चैप्टर्स का नेक्स्ट संडे ले लो टेस्ट. ऐसा रहेगा, अच्छा रहेगा 5 चैप्टर्स का.
चाहे तो दिस वीक विल कमिंग वीक पूरा विल रिवाइज ऑफ दिस 5 चैप्टर्स का. आई विल गो ऑन गिविंग द क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर. फॉर्मल्स पढ़ के रखो. सो मिक्सिंग टुगेदर करके करने वाला है. तो प्रैक्टिस करके देन विल स्टार्ट विद थिंग. पोर्शन टेंशन मतलब पोर्शन तो कैसे भी बैठ के देन संडे 3 घंटे बैठ के करेंगे. नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है. बट थिंग इज जो भी चैप्टर्स कर रहे हो थोड़ा परफेक्शन करो. ओके. हिस्टेरिसिस देखो. हाँ हिस्टेरिसिस देखो आपको समझ में आएगा. हिस्टेरिसिस लूप और मैग्नेटाइजेशन करो बोलते हैं. हिस्टेरिसिस इज अ ग्राफ बिटवीन H एंड I. H वाले मालूम है एक्सटर्नल फील्ड एंड I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो इसमें क्या होगा, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द डोमेन्स का कहानी. एक मटेरियल में H इंक्रीज करता गया. व्हाट विल हैपन टू द I क्या होगा, इंक्रीज, राइट. बिकॉज डोमेन्स पूरा थोड़ा अलाइन होता जाएगा. हाँ, देखो आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ. सो H if I increases the I will increase. एक सर्टेन स्टेज तक गया जाएगा. एक सर्टेन स्टेज होने के बाद क्या होगा, पूरा अलाइन हो जाएगा. पूरा ऑल विल बी डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऑल कांस्टेंट ओनली उसके बाद. ओके. देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम reducing the H करने से क्या होगा, एक्चुअली शुड कम एग्जैक्टली इन दिस डायरेक्शन ओनली. बट वो नहीं आ रहा है ऐसा. वो इट इज टेकिंग डिफरेंट पाथ जा रहा है. ओके. सो क्या हो रहा है, एज H इज डिक्रीजिंग, so it is coming back, some of the domains is coming back, the intensity of magnetism is getting decrease करके इधर H 0 बना दिया. even though H is 0 also, देखो some of the dipoles are still aligned. ऐसा नहीं कि see this is an unmagnetic substance, ऐसा डाला, ठीक है. ओके. मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाया, फुल भर के डालने से क्या हुआ, इट इज ऑल केम टू दिस डायरेक्शन, ऐसा आया. ओके. नाउ क्या हुआ, H एम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ. H अपोजिट डायरेक्शन लगाते जा रहा हूँ. सो मतलब थोड़ा डिक्रीज करता जा रहा हूँ. डिक्रीज करने से सम ऑफ द डाइपोल्स इज गेटिंग अलाइंड इन द डायरेक्शन, सम ऑफ द डाइपोल्स इज अलाइंड. ओके. मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गेटिंग डिक्रीज्ड, बट सम डाइपोल्स आर स्टिल एग्जिस्ट in the same direction. Some dipoles are still exist in the same direction. Even though H is 0 also, देखो intensity of magnetism is there. मतलब मैं external field निकाल दिया, देखेगा तो all dipoles should align, right? Again come back to the original position. It is not coming. Okay. So इसको भी 0 बनाने के लिए नेगेटिव में जा रहा हूँ. H में नेगेटिव में इनका और भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ. करते तो स्लो डिक्रीजेस टू 0 जब तक आएगा 0. ओके. मतलब इधर क्या होगा, एग्जैक्टली H के डायरेक्शन में अपोजिट में आ गया ऐसा. सो ऐसा करके इधर तक कांस्टेंट हो गया, इधर तक पूरा आ गया. ऑल डाइपोल्स केम इन द पिक्चर इन दिस डायरेक्शन. अगेन I will start increasing. Again it will come to the same path like this in this direction. This cycle will repeat. Why we are increasing and decreasing means we are giving like transformer course. If you see आगे आपको ट्रांसफॉर्मर कोर्स आएगा. दिस इज ट्रांसफॉर्मर कोर. ये पूरा ट्रांसफॉर्मर कोर है. इसमें क्या होगा, we are applying AC cycle. One is positive, one is negative. So साइकिल की वजह से डाइपोल्स एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ जाएगा ना. सो उसका वो मैकेनिकल शिफ्ट की वजह से देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट विल बी देयर. वो डाइपोल्स की वजह से, वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है. हर मेटल में सम एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट. कितना एनर्जी लॉस होगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय हिस्टेरिसिस लूप. हिस्टेरिसिस लूप से एक साइकिल का वी विल सी, एंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ use the energy loss in this material में. So based on your requirement, that material only we have to use. Soft iron core use करेगा in this में to reduce the hysteresis loop loss करने के लिए. Okay. So इसका कहानी देखेंगे पूरा, theoretical है पूरा, there is no formula, but एक छोटा सा conclusion रहेगा. देखो, intensity of magnetism increases with an increase in H initially through OA and reaches saturation at A. देखो initially okay, saturate हो गया. Then क्या होगा, when H is decreased, I decreases, but it does not come to 0 at H equals 0. देखो, even H equals 0, I is not 0. I is already is there. And that point, देखो, the residual magnetism set up in the material represented OB is called retentivity. This OB region को we called as retentivity. मतलब even though H is 0, external field 0 कर दिया तो भी some of the domains still there in that direction में.
So retentivity, residual magnetism. That's why some material may already magnetism property is there inside. So because of this direction के वजह से retentivity. Okay, short form will go. So next Sunday 5 chapters test. पूरा. No problem. JEE means questions करो पूरा. All questions I already uploaded in the website, right? इसमें भी रखूंगा, मैग्नेटिज्म मैटर रखूंगा, एंड आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी तक रख दिया. मून चार्जेस आल्सो आई प्लेस्ड. ओके, ये टर्मिनोलॉजी लर्न करना है. रिटेंटिविटी ग्राफ है टर्मिनोलॉजी. नो क्या होगा? To bring I to 0, that means to demagnetize, magnetizing force is applied opposite direction. This magnetizing force represents OC is called coercivity. देखो ये I 0 बनाने के लिए H को मैं उल्टा लगा रहा हूँ, लगाने से इधर इस पॉइंट में 0 हो जाएगा. I is 0, x एक्सिस में y is 0, right? I is 0, and this OC को as coercivity is called coercivity. Retentivity and coercivity. And then क्या होगा? After reaching the saturation level to D, again saturation, when the magnetizing force is reversed, the curve closes at A completely one cycle. Finally curve close हो जाएगा. That is called one cycle. And very important, area of IH loop is proportional to energy lost per cycle per unit volume. Energy lost per cycle per unit volume. Okay, that means I can write like this: energy lost per cycle volume is equal to, when I remove proportionality, will get constant, mu naught times of area of IH loop. So energy lost per unit volume, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी लॉस्ट है. टोटल वॉल्यूम में टोटल एनर्जी, मतलब आपको कितना कोर यूज करेगा, दैट मच कोर इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट टोटल एनर्जी लॉस्ट इन ए दैट मटेरियल में. This idea will give the hysteresis idea will give the कितना losses हो रहा है बोल के. And mu naught in already, mu naught times of area into area of IH loop. Okay, चलो. Now we will see the different things, like soft and hard ferromagnetic substance का क्या क्या है, we'll see. ऐसा जरूरत नहीं है. हाँ, soft and hard ferromagnetic substance. देखो, it has low coercivity वाला, x axis वाला जो भी है, जो coercivity वाला, and इसमें hard वाला में high coercivity. See, based on the different materials, उसका accordingly we will use the material, whatever requirement ours, that one we will use. And इसका small energy loss होगा soft वाला, and इसमें high energy loss होगा. And low retentivity soft वाला में देखो all are low छोटा soft वाला, and इसमें high retentivity, बहुत high retentivity है. And soft iron core example है, soft iron core will use, दोनों coercivity and retentivity low है. And ये वाला like steel, alnico, these all are
hard ferromagnetic substance. matlab nothing but here these are permanent magnets we will use in permanent magnets. मतलब क्या permanent magnets means even though H is removed also the magnetism will be there inside permanent magnets, but इसमें H remove किया तो वो पूरा उधर आ जाएगा and magnetism will be very low. Okay, and इसमें किधर किधर यूज होगा? used in course of solenoids, electromagnets and course of transformers में वगैरह में we will use this soft ferromagnetic material, and here used in making permanent magnets में we will use. These are the examples. यही permanent magnets है definition that's it. So they'll give the graph. Okay, graph देखकर आपको idea होने का कि which is hard, which is soft, which one is used as electromagnets, which one is used as permanent magnets. Yeah, permanent magnets वाला high retentivity and high coercivity value रहेगा. मतलब if you compare like this में ये वाला भी ज्यादा रहेगा and ये वाला भी ऐसा ज्यादा रहेगा, ऐसा रहेगा. But इसमें if you compare ये वाला कम रहेगा and ये वाला भी कम रहेगा. So by seeing the comparison, you should tell which is used in solenoids, transformer cores, which core is used as permanent magnets, we can tell. So by this chapter done successfully. Okay.